नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ना, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एसडीएम में क्या होता है, दैट देयर इज अ डेडिकेटेड स्पेस गिवन टू अ पर्टिकुलर चैनल सो दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, हर एक चैनल के लिए उसी स्पेस में फ्रीक्वेंसीज डिवाइड करके रखते हैं। लाइक एक स्पेस में दो फ्रीक्वेंसीज अगर फिट हो सकता है तो हम पूरा स्पेस किसी एक चैनल के लिए देते हैं, हम वो एंटायर स्पेस को फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करते हैं एंड एक फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली एक चैनल को अवेलेबल करते हैं। See, like this over here. Let's say there are 6 channels available. तो जितना भी spaces available था, assume करिए that 3 spaces ही available है, लेकिन एक space में दो frequencies को handle करने का bandwidth है. So what I'll do, that entire space I'll divide it into two. So one frequency is allotted to one channel, second frequency is for second channel, and so on. So इससे benefit क्या होता है, that this entire frequency is allotted to one channel for the time they want. So and also these frequencies are separated with a distance, what we call as guard spaces. So there is minimal interference or say negligible interference. So now overlapping का problem होता है काफी बार, और ऐसा है कि एक एक frequency भी इनको dedicated रहता है, तो you know others may not need to have to wait for spaces of things to be allocated to them. So this is called as frequency division multiplexing, where each channel has a dedicated frequency for the time they have. See, it describes means to subdivide the frequency dimensions into several non-overlapping frequency bands. Each channel is now allocated the frequency band as indicated. Senders using a certain frequency band can use this band continuously. As I said, since it is allocated to a particular channel, so a sender or receiver using K1 channel or say K4 channel, whichever channel they are using, they are allotted this channel for the time they want, for the time they are exchanging the data. Again, guard spaces are needed to avoid frequency band overlapping. यानी guard spaces in the sense कि हम adjacent channel interference ना हो, इसके लिए we are making sure that every frequency is having a distance between them. This scheme is used for radio stations within the same region where each radio station has its own frequency. This very simple multiplexing scheme does not need complex coordination between sender and receiver. The receiver only has to tune in to the specific sender. यानी इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है, रिसीवर को सिर्फ जानना है कि कौन से चैनल से द सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, कौन से फ्रीक्वेंसी से इट इज सेंडिंग द मैसेज एंड जस्ट ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी. Similarly, what we do to radio stations. So the advantages, as I said, there is no complex coordination needed. It also works with analog signals. Sending and receiving is very simple. The disadvantage is that it works very unwell when there is, say, traffic issues. ऐसा हो सकता है कि हमने सबको इक्वल बैंडविड्थ दिया है, बट K6 चैनल पे बहुत लाइट लोड है एंड K3 चैनल पे बहुत हैवी लोड है. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्योंकि हैवी लोड है, यहाँ पे बैंडविड्थ कम पड़ रहा है एंड यहाँ पे बहुत लाइट लोड है, इसके लिए ये सिर्फ हार्डली कुछ के बैंडविड्थ यूज कर रहा है एंड द रेस्ट ऑफ द बैंडविड्थ इज गेटिंग wasted. So this approach is inflexible because you cannot switch frequencies. कि अगर K3 को जरूरत है अगर K6 का फ्रीक्वेंसी कुछ टाइम के लिए इसको दे दो सो दैट ट्रैफिक लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनफ, ये सब चीजें इसमें नहीं होता है. And even the guard spaces sometimes become problem that they are uneven and signal interference sometimes like multi-times. Next, we study time division multiplexing. In time division multiplexing, a channel player is given the whole bandwidth for a certain amount of time. That is, all senders uses the same frequency but at different times in time. यानी इसमें क्या होता है कि जितने भी frequencies अपने पास available है, we are giving that to a particular channel only for a limited amount of time. फ्रीक्वेंसी डिवीजन में कैसा था कि जो चैनल जिस फ्रीक्वेंसी को हमने अलॉट कर दिया है, दैट चैनल कैन हैव दिस फ्रीक्वेंसी टिल इट्स एंड, लाइक जितना चाहिए उतना तक हम दे सकते हैं, हमेशा के लिए अलॉट हो जाता है लाइक दैट. टाइम डिवीजन में वैसा नहीं है. टाइम डिवीजन में हम क्या करते हैं, वी आर अलोकेटिंग द फ्रीक्वेंसी टू अ चैनल फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम so that all senders, उसने K1 को ये allot किया है, like say for 1 hour, after 1 hour even K2 can use this frequency, K3 can also use this frequency later after 1 hour, which means all frequency bands are available to all the channels for a respective time slot. Again, dot spaces which now represent time gaps have to separate the different periods when the sender uses the medium. So इसमें guard spaces क्या होगा
टाइम लैप्स का होगा. सी लाइक इफ यू टेलिंग द 10 to 11 K1 will be using, then you cannot have 11 to 12 क्योंकि काफी बार सिग्नल्स का प्रॉब्लम होगा. So you have to keep that guard spaces की अगर 10 से 11 K1 यूज कर रहा है, so K2 can use it from 11:30. So that 30 minutes का guard you can keep कि अगर कुछ भी issues होता है, problems होता है, काफी बार K1 को रिलीज करने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए या सिग्नल इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हो, so you can resolve that. And when K2 is overtaking this channel, it can use it without any problem. If two transmissions overlap in time, this is called as co-channel interference. मतलब काफी बार ऐसा होता है गार्ड स्पेसेस बहुत कम रखते हैं, जैसे मैंने बोला 10 to 11 रखा और केटी को 11:05 से 12:05 तक रखा, केटी को 12:10 से 1:10 तक रखा. So in this case what happens, काफी बार ओवरलैपिंग होने का चांसेस हो जाता है जिसको हम co-channel interference बोलते हैं, because the one might release and the other might occupy at the same time. So that interference leads to a problem, and such kind of interference is termed as co-channel interference. To avoid this type of interference, precise synchronization between senders is necessary. यानी जैसे मैंने बोला कि ये चीजें अवॉइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाइमली मैनेज करना बहुत जरूरी है. A channel gets the whole spectrum of a certain amount of time. यानी एक चैनल को पूरा स्पेक्ट्रम मिल सकता है for limited number of time. Advantages क्या है? Only one carrier in the medium at any point of time. Throughout high even throughput is high, sorry, even if many users are available. If at a time सिर्फ एक ही user को allocated होता है for limited time, so entire spectrum is available for everyone, so that is the advantage. And next, जितने number of users है, throughput यानी response time हमेशा high होगा. डेटा जो हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन विल ऑलवेज बी फास्टर इवन इफ द नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग. डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी. जैसे मैंने बोला था कि सिंक्रोनाइजेशन यानी गार्ड टाइम, एलैप्स टाइम बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, तो दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज विद टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. Next, we'll see what is time and frequency multiplex.